Assalamu alaikum Plz family, welcome to another vlog. Good morning, I hope you all are doing good. और आज मैं आपको जो है वो we are in Shanghai and it's like 5th or 6th day today. तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे होटल में अपने. मेरा नाश्ता जो है वो is very simple. I can show you. I am having these fruits और साथ में boiled eggs. ये मैं खाऊंगा और इसके बाद फिर मैं जो है वो अपने ओट्स मुझे मिल गए हैं, मिल्क और ओट्स लूँगा और इस तरह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नाश्ता हो जाएगा. बाकी जो खाना है वो चूँकि डाउटफुल है तो वो तो मैं खा नहीं सकता हूँ. ये हमारे होटल का रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रोज़ आते हैं सुबह. वो सामने कॉर्नर में बूफे लगा है. मैं भी जाऊंगा ओट्स लेने के लिए तो मैं आपको वो कॉर्नर पे दिखा दूंगा. ये बूफे कॉर्नर और ये सारा यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ये कुछ मीट है, एग्स हैं और ये भी मीट एग्स वगैरह रोल्स पड़े हैं यहाँ पे. ये कुकीज़ वगैरह हैं, पर भी सब है यहाँ पर. और ये सारा चाय शाय का जूसेस का फ्रूट्स का कॉर्नर है. So now I will take my oats. Okay guys, then our inviter picked us from our hotel and took us to their factory which was situated in Jianghuai and it was like 4.5 hours away from Pudong. And our journey was very smooth and nice. We had a break also to just get a refresher. जीआरसी फैमिली, तो अभी हमारा आज का ट्रिप चल रहा है. हम लोगों ने यहाँ पर जो जिनके हम गेस्ट हैं वो अपनी टेस्ला को यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं. हमने थोड़ी कॉफ़ी शॉफ़ी ली है, अभी यहाँ से हम चलेंगे. Finally, we reached to their factory and they took us to their technical and design department where they showed us that how before production they do design different kind of machines, and then they took us to their production line and we really amazed that they are using a very high technology. Before, I remember that in our industry mainly Italian and American machines were into the business, but now I'm really amazed that Chinese companies are literally giving a high competition and they're producing very high technology machine with taking care of all high quality standards. They showed us that how they are making the molds of the machine, and with these molds they are making the frames of the machine. Then they took us to their finished goods and packing department where actually different parts of the machine are very closely being observed and cleaned so that they assembled the complete machines. And you see this, they told us that they have different clients in different parts of the world and they do customize as per the client's requirement, whatever clients required them. So they do the design and the coloring of the machine. That this company is really a very having a very high quality technology and the system with the help of which they do produce different styles and different designs as per the different regions of the customer's requirement. So finally you can see this is a department where all finished goods are there. ये सारी machines जो after complete testing they took us to a warehouse जहाँ पर उनकी प्रॉपर एक फाइनल टेस्टिंग की जाती है. मशीन्स को प्रॉपर चेक किया जाता है कि सारी मशीन्स एज पर ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हैं, सेट हैं टू डिस्पैच. बिफोर फाइनल पैकिंग यानी पुटिंग द मशीन्स इनटू बॉक्सिंग करने के, दे टुक एवरी सिंगल मशीन टू अ वाटर एरिया जहाँ पर उनकी प्रॉपर वाटर लीकिंग टेस्टिंग की जाती है. And you know what? They do this testing for almost a day.
every single machine they do water testing for a day just to make sure कि कोई water leakage ना हो. And they took us to a halal restaurant which was in Jianghuai, and food was really fantastic. We really enjoyed. And then finally they took us to their office where they did a really warm welcome for us. जी आरसी फैमिली, तो मैं अपने होटल वापस आ चुका हूँ और पूरा दिन आज बहुत बिजी रहे. आई एम रियली थैंकफुल फॉर आवर सप्लायर्स जिन्होंने हमें ऐसा अमेजिंग रिसेप्शन दिया और उन्होंने हमें रेड कार्पेट वेलकम किया. वी आर रियली रियली ऑनर्ड एंड थैंकफुल फॉर देम. और उन्होंने मतलब यार चाइनीज़ लोग मैं जो सोच के आया था, कुछ होता है ना कि आप एक जगह पे नहीं गए होते हैं तो आपके माइंड में और कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर आया हूँ. इट्स बीन लाइक 6 days ऑलरेडी. जहाँ जितने भी लोगों से हम मिले, एग्जीबिशन हमने अटेंड की, वैसे हम लोग जो मार्केट्स में घूम रहे हैं, और स्पेशली जो आज का दिन था बहुत ही अमेजिंग रहा. कैसे उन्होंने हमें अपने पूरी फैक्ट्री जो है और उसकी उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो उन्होंने हमें दिखाई. अपने ऑफिस लेके गए, रेड कार्पेट उन्होंने हमारा वेलकम किया, पूरी उनकी टीम ने, उनके पूरे ऑफिस ने. और फिर उन्होंने हमें वहाँ पर डेमोज दिए और जो है वो डेमोस्ट्रेशंस हुई. इस तरह गेस्ट के साथ जो है किया जाता है, लंच करवाया और साथ में हाई टी की, और हमारे लिए जो है वो गिफ्ट्स लेकर आए. और उन्होंने हमारे जो है फ़ोटो जो है उनके साथ जो हमने खींचे वो भी उन्होंने हमें फ्रेम करा के गिफ्ट किए. लाइक आई एम रियली रियली ऑनर्ड, ओवरवेल्म्ड, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आवर सप्लायर. बहुत मज़े का दिन था, हेक्टिक था, बट इट वाज फुल ऑफ फन, नॉलेज एंड व्हाट नॉट. तो बहरहाल अभी मैं होटल वापस आ चुका हूँ और आज का दिन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब कल का दिन जो है वो संडे है, बेसिकली हम ऑफ हैं. कल हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि चाइना को थोड़ा और एक्सप्लोर करें, कुछ घूमें फिरें और से कुछ नई जगहों को देखें. आप लोग मेरे साथ रहिए. आई होप कि आप लोगों को ये सफ़र हमारा पसंद आ रहा होगा. तो उसके लिए आप जल्दी से आरसी फैमिली को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें. आपसे मिलेंगे कल एक नए अच्छे और एक्साइटेड व्लॉग के साथ. तब तक मासलामा.